स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है राइट ए नोट ऑन प्लास्टिड्स। What are different types of plastids? Answer: the plastid is a double membrane bound organelle. It is found in the cells of plants, algae and other eukaryotic organisms. Like the mitochondria, the plastids also have their own DNA and ribosomes. The plastids provide color to fruits and flowers. Plastids are involved in the manufacture and storage of food. Plastids are called the kitchen of the cell because plastids contain a pigment called chlorophyll which plays an important role in the process of preparation of food by the plant cells called photosynthesis. Types of plastids. There are two types of plastids. First, leucoplasts. These are white or colorless plastids. They do not participate in photosynthesis. They store materials such as starch, oils and protein granules. Second is chromoplasts. These are colored plastids due to the presence of various pigments. The chromoplasts which contain chlorophyll are known as chloroplasts. Chloroplasts are important for photosynthesis in plants. Chloroplast also contains various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाती हूँ। प्लास्टिड्स एक डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट्स, एल्गे और दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स का अपना डीएनए और 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। प्लास्टिड्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। ये फूड को मैन्युफैक्चर और स्टोर करने के काम में इन्वॉल्व होते हैं। प्लास्टिड्स की टू टाइप्स होती हैं, ल्यूकोप्लास्ट। These are colorless और white plastids. ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करते हैं। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। ये प्लास्टिड्स कई पिगमेंट्स की प्रेजेंस के कारण कलर्ड होते हैं। वह क्रोमोप्लास्ट जिनमें हरे रंग का पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होता है उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के साथ साथ कई येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी होते हैं। प्लास्टिड्स को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि प्लास्टिड्स में हरे रंग का पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होता है जो कि प्लांट सेल्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आता है। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you.